with the first problem, which is problem 13-105. So I hope that this problem screen 13-105 problem is visible to all of you. Yes, sir. Okay. Let us first of all read the statement of this problem. You have a smooth particle, which is this particle P, and it has a mass of 80 grams. So please make sure कि आप ये unit सही इस्तेमाल कर रहे हैं. The mass is given to you as 80 grams. So जब आप इसको kg में convert करके डालेंगे तो accordingly आपका divided by कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा. सो इसको 0.08 kg के तौर पे आप जो है वो डाल सकते हैं. It is attached to an elastic cord extending from point O to point P, and due to the slotted arm guide, this particle P moves along the horizontal circular path. ठीक है. तो आपके पास ये सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर ये पार्टिकल मूव कर रहा है. क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस गाइड रॉड, जो कि रोटेट कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 5 रेडियंस पर सेकेंड. इफ दिस कॉर्ड हैज अ स्टिफनेस ऑफ 30 न्यूटन पर मीटर. So this cord which is connecting this particle P with the center of rotation O, it is an elastic cord, so it has a stiffness of 30 newtons per meter. So you are going to take it as a spring. आप इसको as a spring के तौर पे consider करेंगे because this cord is elastic cord और इसका आपको K जो है वो known है. The unstretched length of this cord is given to you as 0.25 meters. You need to determine the force which this guide rod is exerting on the particle at the instant when theta is equal to 60 degrees. The guide has a constant angular velocity of 5 radians per second. It means that the angular acceleration is going to be equal to 0 because this rod is rotating with a constant angular velocity. The motion is again occurring in the horizontal plane. So it means that you are not going to include the weight as such in this particular case. Is the problem clear to all of you? Yes, sir. Okay, so moving towards the axes first of all. In order to draw the axes which are involved here, so I'm going to draw first of all the radial axis, which is the r axis. The direction of this radial axis is going to be, radial axis का direction क्या होगा? It is going to be in this particular direction. So let me say that this is my r axis. Accordingly, perpendicular to this radial axis, this is going to be the direction of transverse axis, that is 90 degrees with respect to the radial axis. ये आपके पास transverse axis जो है उसका direction आ जाएगा, which is 90 degrees with respect to the radial axis. ये दोनों axis clear हैं रेक को? Yes, sir. Okay, what about the tangential axis in this case? Inspection से क्या नजर आ रहा है? Tangential axis किस तरफ होनी चाहिए? It should be tangent to the curve at this instant. So should it be positive? Psi की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए? तो पॉजिटिव आएगी. तो पॉजिटिव आनी चाहिए. So applying that formula of psi, which is tan inverse r over dr by d theta. R is given to us as 0.8 sine of theta. What is going to be the first derivative of this r? Cos theta. 0.8 cos of theta. So putting the value of theta to be equal to 60 degrees, हमें जो psi की value है that comes out to be 60 degrees here. Since this psi comes out to be a positive value, so हमारे पास ये वाली जो axis है t axis, ये r axis से counter clockwise direction में 60 degrees के ऊपर lie करती हैं. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so accordingly जब हमारे पास t axis आ गई, उसके accordingly this should be the direction of n axis. So these are the 4 axes which are involved here, r and theta axis as well as n and t axis. Okay, now moving on to the various forces which are being involved in this case. So forces जो involve हैं हम उसके हवाले से जो है वो लिखते हैं. सबसे पहले the force which this slotted guide rod is exerting on the particle, due to which this particle is basically rotating on that circular path. वो force जो है उसको हम FOA का नाम दे देते हैं.
what should be the direction of that force? Along positive theta. Along positive theta. So this is basically that force which we are talking about, the force which this slotted guide rod is exerting on this particle. So we have named it as FOA, and it would be directed towards the theta axis. Okay, any other force? सर दो और फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स आ रही होगी। Okay, just a minute. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आ रही होगी वो क्यों आ रही होगी? किस सर कनेक्शन को दो, रिमूव? एक तो जो उसकी वैसे डिस्क के साथ है वो, ओके, डिस्क के साथ जो कनेक्शन है उसको जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स आएगी. व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट नॉर्मल फोर्स? सर नेगेटिव एन के अलोंग. ओके, एन एक्सिस के अलोंग चलें, अभी कह देते हैं उस पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात, तो फिर वो बात की कहानी है. तो दिस फोर्स एन सी वुड बी एक्टिंग अलोंग द एन एक्सिस. जो क्यों आई है ये फोर्स हमारे पास? जब हमने इस पार्टिकल और डिस्क के कनेक्शन को रिमूव किया है, तो डिस्क को रिमूव करके हमें डिस्क की वजह, रिमूवल की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिली है. अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करते हैं, वो इस नॉर्मल फोर्स को इस आर एक्सिस के अलोंग बना देते हैं, हालांकि नॉर्मल फोर्स आपको पार्टिकल और डिस्क के कनेक्शन की वजह से मिल रही है. जब डिस्क को आप रिमूव करेंगे तो डिस्क और पार्टिकल का कनेक्शन टी एक्सिस के अलोंग है, तो उसके परपेंडिकुलर एन एक्सिस के अलोंग आपको ये नॉर्मल फोर्स मिलेगी. अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि बाय मिस्टेक they draw this normal force to be acting along the r axis, which is wrong. So please make sure कि आप जो जो आइसोलेट कर रहे हैं पार्टिकल को, जिस जिस चीज का कनेक्शन रिमूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फोर्सेस जो है वो मिलनी चाहिए. Is this point, this normal reaction force, clear to all of you? यस सर. Okay, now coming to the other force which is being involved here. जी अब्दुल्ला, कौन सी फोर्स थी? सर इलास्टिक फोर्स जो है. इलास्टिक फोर्स, या हम इसको स्प्रिंग फोर्स कह लें, इलास्टिक कॉर्ड के रिमूवल की वजह से जो आ रही है. सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? सर अलोंग नेगेटिव आर. Along negative r. Okay, so let me denote it with a yellow color, and this force, which is the spring force, it would be acting in this direction, which is towards the negative r. My question is, why you have drawn this spring force towards the negative r? Positive r की तरफ नहीं हो सकती थी ये? सर वो स्ट्रेच हुआ हुआ है ना. टेंशन. The correct answer is कि since the spring is being stretched at this moment, so जब भी spring stretch होता है, the spring force will try to move that spring to its neutral position. तो वो उस डायरेक्शन में लगेगी जो उसको वापस अपने न्यूट्रल पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहती है. तो वो आपका फिर ये वाला डायरेक्शन बनता है, which is towards the negative r axis. Okay, my next question is, Abdullah, आपके बजाय कोई और आंसर करे, any other volunteer? The question is, how we have judged that the spring is being stretched at this point? सर क्योंकि उसकी ओरिजिनल लेंथ जो दी हुई है वो 0.25 मीटर दी हुई है, और यहाँ पर फ्रॉम सेंटर से रेडियस तक की सर जो डायमेंशन है वो 0.4 मीटर है. That's correct. So definitely ये 0.25 से तो बड़ा ही होगा. It means that the spring is going to be stretched at the instant when theta is equal to 60 degrees. That's why we have drawn the spring force towards the point O, that is towards the negative r axis, rather than towards the positive r axis. Is this point clear to all of you? यस. Okay, what about if frictional force is also being involved here? अगर होती तो किस डायरेक्शन में आती फ्रिक्शन फोर्स? along negative t. Along negative t axis. Okay, so these are since friction is not involved here because the particle is smooth, so now all the forces are being shown on this free body diagram. Now we need to apply the equations of motion along the r and theta axis in order to determine the forces here. So once we are applying summation Fr equal to MAR, the forces which are acting along the R axis. अगर हम थोड़ा सा एंगल्स के हवाले से बात कर लें, जिस तरह भी हमने कहा T और R के दरमियान हमारे पास साई है, तो हमारे पास ये वाला एंगल T और थीटा के दरमियान इट शुड बी 90 माइनस साई, विच इज 60 डिग्रीज. अकॉर्डिंगली हमारे पास N और नेगेटिव R के दरमियान भी एंगल जो है
वो हमारे पास अकॉर्डिंगली 30 डिग्रीज ही जो है वो आएगा. इट मीन्स दैट वंस आई एम रिजॉल्विंग एफ आर या फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूँ अलॉन्ग द आर एक्सिस, what are the forces which I should include in this summation FR equation? The horizontal component of NC और जो spring force है. Horizontal component की बजाय इसको R component कहते हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? Yes sir. So वो कौन सा component है? NC cos sin. NC cos of 30 with a positive sign, since once you resolve this NC along the R and theta axis, the R component is going to be positive, but the theta component is going to be negative. So NC cos 30 एक component आ गया जो कि R axis के along act करे. Any other force which is acting along the R axis? Spring force here. So spring force है, and since this spring force is acting towards the negative R axis, so we should include it with a negative sign. It should be equal to MAR. Let us say that this is our equation number 1. Summation FR equal to MAR. NC cos 30 minus F spring should be equal to MAR. Is this equation clear to all of you? Yes sir. Okay, now applying the equation along the theta axis, summation F theta equal to MA theta. What are the forces which are acting along theta axis here? FOA or NC sin theta, sin 30. The force which this guide rod is exerting on this particle FOA, and the sine component of NC. So NC sine of 30 with a negative sign should be equal to MA theta. So let us say this is my equation number 2. From kinematics, we can easily determine the value of AR and A theta. So once we have applied those kinematics, we are going to get the values of AR and A theta. Still in these two equations, 1 and 2, we have how many unknowns? NC, FOA and F spring, 3 unknowns, 2 equations. So can we evaluate the spring force? Yes sir. What is this spring force? F spring is K L minus L naught, isn't it? Yes sir. Where L is the length of the spring at the instant जिस पे आप analysis कर रहे हैं, and L naught is the unstretched or neutral length of that spring. This neutral length is given to you as 0.25 meters. What about this length L? What should be the value of this length L? 0.8 sin 60. 0.8 sin 60. ये कैसे आपने बताया है? सर उसके जो R का distance है point O से P तक. That's correct. At the instant when theta is equal to 60 degrees, this is going to be the length L जिसकी हम जो है वो बात कर रहे हैं. So this is going to be the length L, which is basically equal to the R coordinate या radial coordinate, which is 0.8 sin theta, और theta आपके पास चूंकि 60 है, so this L would become 0.8 sin of 60. यहाँ से आपको spring force मिल जाएगी. Then your system reduces to 2 equations and 2 unknowns. Once you solve this system simultaneously, you are going to get the values of those 2 unknowns. So is the solution clear to all of you? मूव करते हैं हम जो एक्चुअल सोल्यूशन है उसकी तरफ. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि ये वो फोर्सेस हैं जो इन्वॉल्व होंगी. वन इज दिस फोर्स OA विच वुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द थीटा एक्सिस, NC वुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द N एक्सिस, स्प्रिंग फोर्स वुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव R एक्सिस. So applying the equation of motion, summation FR equal to MAR, summation F theta equal to MA theta. Using kinematics, R at theta equal to 60 degrees would be 0.6928. R dot would be equal to 2 meters per second. Again, kindly ये भूल ना जाइएगा theta dot apply करना. We are applying the chain rule since R is given to us as a function of theta. Similarly, R double dot is going to be minus 17.321. Accordingly, हमें AR और A theta की value मिल जाएगी, which we are going to put in equation 1 and 2 towards the right hand side of both these equations. Then we have discussed about the spring force. The spring force is basically A. क्या चीज? L का, लेकिन L की वैल्यू किस तरह थी? जी मैं वो दोबारा बताता हूँ. ये स्प्रिंग फोर्स के ऊपर जब हम आए, तो स्प्रिंग फोर्स हमारे पास होती है kx के बराबर, वेयर x इज द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स न्यूट्रल पोजीशन. इसको हम L माइनस L नॉट के तौर पे लिखते हैं. अब यहाँ L नॉट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दिस कॉर्ड हैज अ अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 0.25. जहां तक ताल्लुक L का है, तो L रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग या लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड at the instant consider.
अब जो इंस्टेंट हमने कंसिडर की है उस पे इस कॉर्ड की लेंथ जो है वो यहाँ से लेके O से लेके P तक है, ऐसे ही है? ओ से लेकर है। जी, ये O ही हमारा फिर सेंटर पॉइंट है ना जिसपे कॉर्ड जी कनेक्ट हुआ हुआ है। इथार के जहाँ तो से O वो से सुराख लेके, शुरू होता है वहां से हाँ, होता तो O से लेके P तक जो लेंथ है 60 डिग्रीज थीटा के ऊपर, ये लेंथ L रिप्रेजेंट करती है। यही हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट R भी तो यही चीज है ना, जो O से लेके इस सेंटर यानी इस पार्टिकल तक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So basically R and L are same thing. So R is given to us at the instant 0.8 sine of theta, and theta is 60 degrees. So putting 60 degrees theta, this R would be equal to L, which is 0.8 sine of 60. Clear है ये चीज? है। क्लियर है। ठीक है, सो आपने L की जगह ये R की वैल्यू पुट कर दी, which is 0.6928. That will give you the spring force to be equal to 13.284 Newton. Now, once this spring force is known to us, the system reduced to two equations and two unknown. One unknown is NC, the other unknown is FOA. So once you solve these two equations, the values of these two unknowns comes out to be 7.67 Newton and 12.1 Newton. Is this thing clear to all of you? Any question, any query which you want to ask regarding problem 13-105? Okay, चलिए, अगर मैं आपसे कहता कि आपने ये सारी एनालिसिस थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज पे करनी है, लेट अस सपोज, सो उस केस में क्या चेंज आनी थी? किसी फोर्स के डायरेक्शन में चेंज आती? सर 30 की वैल्यू का उनकी साइन किसकी वैल्यू? साइन 30 की? साइन 30 is 0.5 and 0.8 sin 30 is 0.4. So again, the spring would be stretched or compressed? दैश तो उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ तो वही है 0.25. इसका वही है ना सर, स्ट्रेच दिए। फिर stretched ही है. Okay, what about if this angle is 10 degrees? This 0.8 sine of 10 would be equal to 0.139. In that case, the spring would be प्रेस compressed. So accordingly, the direction of spring force is going to be towards the positive R axis. ठीक है, तो काइंडली इस बात पे ख्याल रखें कि इंस्टेंट चेंज करने के हिसाब से भी आपकी फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम अकॉर्डिंगली. स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो अननोन फोर्स नहीं होती, वो आपको नोन होती है, तो काइंडली उसको आप अपने सही डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ करेंगे. Okay, any other question which you want to ask regarding this exercise problem?